तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम सभी लोगों ने होली का पर्व मनाया है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ईस्टर भी था, उसके लिए भी हैप्पी ईस्टर। और आगे कुछ दिनों में ईद आ रही है, तो ईद की भी मुबारकबाद। ये जो मौका भी निकला है होली का, या कोई भी त्योहार होता है तो हम सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं कि इस त्योहार की शुभकामनाओं के साथ विश करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, आनंद आए, हैप्पीनेस और जॉय, इस तरह की बहुत सी हम लोग बधाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है, और आप सब लोग भी सहमत होंगे, कि हैप्पीनेस और जॉय यानी जो ये खुशी है, प्रसन्नता है, ये हमारे अपने अंदर से आती है और उसके पीछे हम खुद बहुत जिम्मेदार होते हैं। कोई त्योहार आपको खुशी नहीं लाके देता है, बल्कि किस तरह से आप त्योहार को मनाते हैं, अपने आप को उससे आप अपने आप को संबंधित करते हैं, कैसे उसमें आप रमते हैं, उससे आपको खुशी मिलती है और आनंद आता है। तो इसी सोच के साथ हम आज इकट्ठा हुए हैं और हमारे बीच में जेएस मिश्रा साहब हैं, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। आपने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में बहुत ही उच्च ओहदों पर आपने काम किया है। इसके बावजूद आपकी जो साहित्यिक में रुचि रही है, मैं आपको अपने आईआईटी रुड़की डेज से जानता हूं, वहां पर भी आप जो हम लोग की मैगजीन्स होती थी उसमें आप अपना योगदान देते रहे हैं। आपने हैप्पीनेस पर, जॉय पर आपने पुस्तकें लिखी हैं, गीता पर पुस्तक लिखी है। तो मुझे अचानक ये लगा कि जिस इंसान ने इतना सोच समझकर लिखा है कि हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है, जॉय कैसे आ सकता है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि हम सब लोग होली के इस अवसर पर मिल रहे हैं, जब तमाम हम लोगों ने दुआएं दी हैं लोगों को कि भाई आप खुश रहें, आपको आनंद मिले, तो ये आनंद और जो खुशियां हैं ये हमारे अंदर हैं। तो हम कैसे उस चीज को सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस त्योहारों के बाद वाकई में हमें खुशियां मिलें, वाकई में हमें आनंद मिले। तो जेएस मिश्रा जी, आपको शायद पता होगा कि अभी आपने 1 वर्ष पहले जो सुशांत यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, उसके आप चांसलर हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं। होली के बाद ही आप लखनऊ वापस भी आए हैं, तो आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि आप हमारे परिवार के ही हैं, लेकिन और कुछ ऐसा रहा कि कल से कुछ आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप हमारे बीच में हैं, तो आप सब की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये आपका जो अनुभव रहा है, जो आपने पुस्तकें लिखी हैं, उसके आधार पर ये हम सब लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करी है टॉक प्रेजेंट करेंगे कि हैप्पीनेस एंड जॉय इज की टू वेलनेस। अब देखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी टिप्स हमको मिलेंगे वो हमारे लिए निश्चित ही फायदेमंद होगी। आलोक रंजन जी जो हमारे क्लब के चेयरमैन रह चुके हैं, हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, आप भी आज हमारे बीच में, से हमेशा आपका आशीर्वाद रहा है। मिश्रा जी और आलोक रंजन जी दोनों निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय जेएस मिश्रा जी से, आलोक रंजन जी से, कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें।
मिश्रा जी को आमंत्रित करूं उनकी टॉक के लिए, मैं आदरणीय आलोक रंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी गुड विशेस हमें चाहिए, प्लीज। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एज यूजुअल क्लब ऑफ लखनऊ में ऑर्गेनाइज द ब्यूटीफुल फंक्शन एज टुडे एंड गोपाल जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो हमेशा हर 1-2 महीने में देख रहा हूँ कि क्लब ऑफ लखनऊ के कोई ना कोई बहुत अच्छी बैठक आयोजित कर लेते हैं, एवरीबॉडी गेट्स टुगेदर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड वी आल्सो ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ क्लब ऑफ लखनऊ डिस्कस सर्टेन इश्यूज आल्सो। हमेशा क्लब ऑफ लखनऊ की एक आइडेंटिटी रही है। इट इज नॉट अ क्लब लाइक एनी अदर क्लब, इट इज अ क्लब वेयर पीपल मीट, पीपल टॉक, पीपल एंजॉय, but also people discuss various issues concerned with public policy, concerned with development of the nation, concerned with your own development. Various issues are discussed in this forum. So once again आज मैं बधाई दूंगा कि बहुत अच्छी टॉपिक चुनी है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग के बारे में, and no better than Shankar Mishra to talk about it, my colleague from the Indian Administrative Service, a very refined and very sophisticated and a very brilliant officer. I have known him for a long time. और उन्होंने बहुत किताबें लिखी और वो धर्म को रिलेटेड भी भगवत गीता पे भी उन्होंने लिखा है और बहुत अन्य किताबें लिखी हैं जो पब्लिश हुई हैं। और कुछ हमारा इनका शौक मिलता भी है तो मैं भी, और कुछ बेहतर नहीं मिलता करने को तो मैं भी किताबें लिखता रहता हूँ। तो हम लोग यही काम जो है करते हैं दोनों बैठ के। तो आपस में अभी हम बैठे हुए यही कौन पब्लिशर है कौन नहीं है, कहाँ पे कौन सी किताब, यही अभी चर्चा कर रहे थे बैठे हुए। इन एनी केस दिस बुक ऑफ हिज, एक जॉय फॉर लिविंग पे इन्होंने किताब लिखी है, वह उस पर उन्होंने इसी हैप्पीनेस की टॉपिक पे इन्होंने बात की है। आई हैव रेड दैट बुक आल्सो, आई रिमेंबर इन्होंने मुझे दी थी पहले, एंड इट्स एन एक्सीलेंट बुक एंड आई हैव रेड इट। तो आज उसी को आधार बनाते हुए बोलेंगे और मैं खाली 2 शब्द इसलिए कहना चाहूंगा और बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड इट इज एक्साइटेड मी आल्सो ऑल द व्हाइल। एंड इन फैक्ट हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग पे मैंने अभी व्हेन आई वाज इन जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई डिजाइन्ड अ कोर्स, a 20 session course on happiness and well-being which I taught to the MBA students out there. So I first thought कि MBA वाले happiness and well-being वगैरह की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। तो it was put up as an elective. To my utter surprise 102 students opted for this course और 2 सेक्शन में मुझको ये कोर्स फिर चलाना पड़ा। और हालांकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, लेकिन मुझे बकायदा एज अ टीचर फंक्शन करना पड़ा और 90 मिनट के 20 सेशन एक कोई करके लेने पड़े 2 उसमें, और करके मैंने पढ़ाया हैप्पीनेस वेलबींग। बट रिस्पांस वाज वेरी गुड, पीपल फेल्ट दैट यस वी हैव सीन थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर। और हैप्पीनेस में एक तो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस है जो कि इन्होंने आज आपको बताएंगे, इट इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन। सेकंड पॉइंट में खाली कहना चाहूंगा, बाकी तो जैसे मिश्रा जी बताएंगे, मैं खाली जस्ट मेकिंग 1 or 2 पॉइंट्स। एक तो मेरा ये जो मैंने भी जितना हैप्पीनेस के लिटरेचर पढ़ा है और महसूस भी किया है लाइफ में, तो हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग टू बी रेड, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो हैप्पीनेस में जो महसूस किया है, इट इज सरप्राइजिंगली इट इज अ चॉइस, इट इज अ चॉइस। इट इज नॉट दैट हैप्पीनेस कहीं और से आ जाती, इट इज योर चॉइस, इट इज यू हू हैव टू बी चूज टू बी आइदर हैप्पी और अनहैप्पी, ये आपकी चॉइस है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड इज इट इज अ स्किल सेट, इट इज समथिंग व्हिच यू कैन लर्न। ये पैदाइशी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ पेसिमिस्टिक होते हैं, कोई हमेशा खुश हो जाते हैं, कुछ जल्दी खुश नहीं होते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज अ स्किल सेट। जैसे आप कोई भी चीज सीखते हो, कंप्यूटर सीखते हो, यू कैन इवन लर्न हाउ टू बी हैप्पी। इट इज द स्किल सेट, इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, सेट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स, द वे यू थिंक, उसको अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करें तो यू कैन ट्रेन योर माइंड टू बिकम हैप्पी। सो ये दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है which must realize is, एक गौर गोपाल दास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, have you heard about it? उनका एक बड़ा अच्छा वीडियो है। वो कहते हैं कि एक ऐसी पार्टी हुई थी, उसमें सब लोग बैठे खा पी रहे थे, तो सब लोग बड़े खुश थे। तो उन्होंने किसी से पूछा, किसी लेडी से, कि we want to know does your husband give you happiness? तो she replied no, not at all। तो उस पर वो एकदम घबरा गए, कहने लगे अरे क्या बात हो गई, मेरे हस्बैंड हैप्पीनेस नहीं देता, क्या मामला हो गया? But you look so very happy। She said no, my point is I am not outsourced my happiness to my husband, my happiness comes from within me। मैंने अपने हस्बैंड को अधिकार नहीं दिया कि मेरी हैप्पीनेस डिसाइड करे। I think that is the third most important point, that is the third most important point is you cannot and should not outsource your happiness। मैं इस बात के लिए खुश ना हूं कि जयशंकर मिश्रा ने मुझे ठीक से नमस्ते किया कि नहीं किया और इससे मेरी खुशी डिपेंड हो जाए, या मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया गोपाल सिन्हा ने लाइक नहीं किया, तो ये इससे मेरी हैप्पीनेस इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। It is something which is coming from me, from within, and that is what is important. And last point, इंडिविजुअल से हटके कंट्रीज की भी हैप्पीनेस का होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंट्रीज की रैंकिंग कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 से निकल रही है। यूएन ने 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी डिक्लेयर किया है।
and every year this report comes out. अभी 2024 की रिपोर्ट आई है, and it's a matter of concern and also to be thought. We should think about it. India is consistently one of the unhappiest countries. इस बार भी इंडिया की रैंकिंग 142 देशों में से 126वीं, और हर बार इंडिया की रैंकिंग 120 की बियॉन्ड ही होती है. और तो दैट शोज दैट वी आर क्वाइट, एंड दे टेक वेरियस वेरिएबल्स. एक जीडीपी पर कैपिटा लेते हैं, जेनरोसिटी लेते हैं, सोशल सपोर्ट लेते हैं, हेल्थ लेते हैं, एंड यू नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेते हैं, परसेप्शन अबाउट करप्शन लेते हैं. दे आर द वेरियस पैरामीटर्स दे टेक एंड दे डू अ गैलप पोल एंड सर्वे ऑन दैट बेसिस द लिस्ट. तो उसमें मतलब इंडिया का हैप्पीनेस रैंकिंग इतनी लो है, तो ये हमको सोचने की बात होगी आखिर क्या बात है कि हमारे देश में व्हाई आर वी ऑल सो अनहैप्पी एज अ नेशन. हालांकि देयर आर क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस सर्वे. लोग कहते हैं क्योंकि कई देश आगे हैं जो कि नहीं होने चाहिए शायद, अब वो और हम जो आगे दिखाई पड़ते हैं हैप्पियर, व्हिच वी थिंक आर नॉट हैप्पियर देन अस, एंड वी शुड नॉट बी इन सच अ पोजीशन. बट ऑल सेड एंड डन, अब हैप्पीनेस एक इंडिविजुअल का तो हो ही गया है, अब नेशंस की हैप्पीनेस आल्सो हैज बिकम अ सब्जेक्ट. एंड नाउ जो पहले जीडीपी की बात होती थी ना, ग्रोथ रेट की, कि जीडीपी बढ़नी चाहिए, अब लोगों का नया कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं जीडीपी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करिए. As a country, is the quality of the life of people good? Are they happy? इंडिकेशन है, हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट होता है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मेजर करिए कि देश खुश है कि नहीं, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. क्योंकि जीडीपी जो लोग कहते हैं ना आजकल ग्रोथ रेट इतनी बढ़ गई, हम 5th लार्जेस्ट नेशन हो गए जीडीपी में, 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे. बट ऑल सेड एंड डन, एक किसी ने कहा बड़ा अच्छा कि जीडीपी क्या मेजर करता है? ओनली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी. इससे हमारी खुशी से कोई मतलब नहीं. खुशी इज रिलेटेड टू सो मेनी अदर इश्यूज व्हिच जीडीपी डजंट मेंशन. It doesn't measure love, it doesn't measure affection, it doesn't measure how you care and share with each other. It does not mention, as somebody has said, Kennedy थे, रॉबर्ट केनेडी जो इलेक्शन लड़े थे यूएसए में प्रेसिडेंट का, assassinated हो गए थे, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है कि जीडीपी measures everything except what is important in life. तो यही पॉइंट है. तो ये पॉइंट है कि what is important in life is happiness. तो मैं अब इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट मुझे ज्यादा एक्साइट करता है. But I will leave it to you and leave the podium open to my colleague, esteemed colleague Shankar Mishra. Thank you very much. तो कहा जाए कि ये आपका जो भी उद्बोधन था, जो सॉर्ट ऑफ विषय प्रवर्तन जिसे बोलते हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से, उसका सब लोगों को जो आज ये विषय रखा गया उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि क्यों रखा गया, कितना इम्पोर्टेंट है. मिश्रा जी की टॉक के बाद हम लोगों ने एक डिवाइस किया है, क्योंकि गाना बजाना तो होता रहता है. अभी 6 जनवरी को हम लोगों ने नए साल पे किया था, तो डिवाइस किया है. हमारे साथ हमारे ही मेंबर हैं चंद्रशेखर वर्मा जी, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गजल लिखते हैं, शेर शायरी करते हैं. बहुत सारे गुण हैं इनके अंदर, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी. और इसलिए है कि ये भक्ति वर्मा जी के ये सपोर्ट है, ग्रैंडसन ऑफ द फेमस जो उपन्यासकार और साहित्यकार रहे हैं, हमारे शहर की शान रहे हैं, बाबू भक्ति वर्मा जी, उनके आप सपोर्ट हैं. तो ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ये कॉर्पोरेट में जाते हैं, ट्रेनर हैं, बहुत सारी इनकी बहुत खूबियां हैं. तो इनको मैंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हमारे बीच के हैं, हमारे परिवार के हैं, तो इन्होंने डिवाइस किया है कि आप सबके साथ मिलके कुछ फन किया जाए, कुछ जॉय वाली एक्टिविटी, जो आनंद हो, तो कुछ करेंगे हम लोग मिलजुल के, और देखेंगे कि हम लोग उन्हीं चीजों से अपने अंदर, जो अभी आलोक रंजन जी ने कहा कि कैसे उन चीजों के माध्यम से अपने अंदर से हम खुशियों को बाहर करते हैं ताकि हम खुश रह सकें. लेकिन ये प्रोग्राम अभी जो हम करने जा रहे हैं, मैं स्मरण करना चाहूंगा हमारे बीच दो हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर्स इस बीच में हमारा साथ छोड़ गए. एक तो हैं शरद शर्मा जी, जो बहुत सालों से शुरू से जुड़े रहे, और दूसरे हैं हमारे सबके बहुत ही आदरणीय, हम सब लोगों को बहुत ही अपना आशीर्वाद से समृद्ध रखने वाले जस्टिस एस.सी. वर्मा जी. तो ये दोनों पिछले दिनों हम लोगों से सबको छोड़ के चले गए हैं. उनका हम स्मरण करते हुए और आनंद भार्गव साहब से प्रेरणा लेते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हम्बल रिक्वेस्ट टू आदरणीय जेएस मिश्रा जी कि वो आए और हैप्पीनेस जॉय इज की टू वेलनेस इसके ऊपर अपनी टॉक को प्रेजेंट करें, और माइक अब आपके हवाले. A very happy Holi to all of you. A very good evening and a very happy evening.
It has been started so well by our senior Shree ji, but I think most of the talk is concluded. But still, and what it's really a great irony that India, which even during Vedic period thought of the happiness of all, was there Kutumbakam and Sarve Bhavati Sukhina, Sarve Santu Niravaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Pashyantu Bhagave. This thing was prayed in this land, and today we are so down in the World Happiness Index. But nevertheless, I think this is a small group. Still, we can, if we take care of our own happiness and the happiness of the people we are related with, I think the things will change and a new chapter shall be opened. It's really great evening, ladies and gentlemen, when we are meeting here just after celebrating Holi, the great festival of happiness, joy and abundance. The topic of the evening is happiness, joy is key to wellness. I feel immense joy and happiness really to stand before you and speak on happiness and how does it affect our wellness. So all of us understand both the words, what's happiness and what's wellness. But nevertheless, let's see what the scholars of happiness, what do they say about wellness. As per World Institute of Wellness, they define wellness is the act of practicing healthy habits. Is an act of practicing healthy habits on a daily basis to attain better physical and mental health outcomes, so that instead of surviving, you are thriving. If we sit somewhere for some time and think whether we are surviving or we are thriving, I think we will get that there is a lot of scope to make the quality of our life still better. Another view is, this is a quite expanded one, and I think it covers and encompasses a lot of things. Wellness is achieved by combination of emotional, environmental, mental, physical, social and spiritual health. Now, what is the difference between happiness and wellness? As I quoted in the beginning, that this universal prayer, we call it universal prayer, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niravaya. What are the four components of happiness in this particular shloka? Sarve Bhavantu Sukhina, let everybody be happy. Sarve Santu Niravaya, let nobody suffer from any disease or any kind of infirmities. These are two things, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niravaya. Now the wellness part is this, Sarve Bhadrani Pashyantu. The Sanskrit word Bhadrani, it covers the, let everybody be all happy and accomplished in life and dream big, achieve big and be happy and spread joy. So now, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyit Vigbhag, let nobody suffer from anything. That has been the universal prayer of our culture. And I think another thing to understand the happiness and wellness, Sukh or Kalyan. Very soon we are going to have prayers and fast of Navratri, I think it's in April. Now, what we pray in Navratri? We pray, Dehi Saubhagyam Arogyam, Dehi Me Paramam Sukham, Rupam Dehi, Jayam Dehi, Jasho Dehi, Disho Dehi. You give me good luck, Dehi Saubhagyam Arogyam, Dehi Me Paramam Sukham. Give me absolute happiness, Paramam Sukham, Rupam Dehi, Jayam Dehi, Jasho Dehi, Disho Dehi. Agla shlok, the next slok, it defines that wellness aspect of this. That is that Vidhehi Devi Kalyanam, Vidhehi Paramam Shiyam, Rupam Dehi, Jayam Dehi, Jasho Dehi, Disho Dehi. Kalyanam, the word Kalyan. So now I think it's a very good topic and very wisely it has been chosen and given to me. Generally my topic for speaking, if I choose, then I choose what Alok Ranjan Sahab said, that my books are, the first book was Happiness is a Choice, Choose to be Happy. And second book that which I just from Rupa, it's gaining good momentum, that's the art of joyful living. But nevertheless, it's a very, very relevant topic to all of us. How does happiness affect our wellness? Now, we all know, though there is a difference in intensity, Gopalji gave me these two words, the happiness and joy, how it affects this thing. There is a difference of intensity and degree in these two words, feelings.
But nevertheless, for this talk, I will be using the word happiness. So that's one thing. Now, the most important aspect of happiness is, as in his introduction talk, Ranjan Saab said, the most important aspect of happiness is knowing that happiness is a choice. You can choose. It may sound quite strange, but quite often, ladies and gentlemen, we do not choose happiness. We understand that by acquiring material objects, wealth, riches, power and position, this will make us happy. But it doesn't happen that way. What is happiness? We all know the word. It's a feeling we all pursue in our own ways. However, the great Scottish writer R.L. Stevenson said a new thing. What he said? There is no duty we so much underrate as the duty of being happy. So it's our duty in a way, though in our own way we try to do so many things which may make us happy, our children happy, our subordinates happy, our colleagues happy, our parents happy. But nevertheless, a conscious effort, a deliberate endeavor to be happy, sit down and think about it, how we can be more happy, this generally we do not do. So now, of all the pursuits we strive for in life, many of us are doctors, engineers, on big posts, many have done so good in their careers, wherever you are. But you are able many times to achieve that. But one of the most elusive topics that we pursue but we do not realize is the happiness. So now remember, just to imagine, any moment of your life, there may be many reasons. It's not that you are not happy. All of us are happy in many ways, So now, if you feel, when it was last time when you felt an immense sense of happiness, when you really feel very, very happy, there are so many circumstances, then you feel a type of lightness in body and spirit. That energy might have made you shine at work, connect with people, be creative. And even if you are in very great mood, you may smile at the rising traffic, which generally we feel very bad about. So now we understand, if a happiness changes our mood, it elevates our mood, makes us happy, makes us energetic, makes us dynamic, makes us creative, makes us affectionate, then is it possible that, as Ranjan Saab said, is it possible to learn a skill that we can be happy on regular basis? Now here, the positive psychologists, there is right from in last century, mid of this thing, a lot of literature has come, they call it positive psychology. There they say that as you work for your physical health, cardiovascular exercises to improve your joints strength, to improve your muscles, to make your health better, reduce your weight, and so many things we are doing. So they say that's also true about the happiness. With the right attitude, with the right retrospection, exploration, you can be really happy. You can learn the things which make you happy. Just what matters is that you have to think about it. What does happiness mean to you? Recently I had a workshop on happiness in Proggram. Somebody invited, there is a North Cap University, they knew that I have written books, so that Vice Chancellor. So he requested me, I had gone there. They called it workshop, so many people were speaking. So now, what I asked was that, what do you feel, what is the factor that affects happiness? The answers which were given from the audience and everybody, it was all about doing something, getting something, seeking something, acquiring something, achieving something. Typical responses included the issues of money, health, family, love, reputation, status, job, power, recognition, initiatives, past, friends, neighbors and assets, etc. Can anybody add to this group any other factor? Yes. Expectation. The expectations, right. Giving to others. Very well said. That's the key to happiness and wellness, Gopalji. That sharing, they say that even for happiness it is said that happiness was born at twin. That means you have to share it. But happiness, if you share,
it doubles. And if you share your or somebody's worries, that gets halved. It becomes half of it, you know. So now, everybody, you can probably, add to that, the type of, accomplished group is this. Now, interpreting happiness. How do we, in one word or two words, we have to understand what is happiness? How does it affect wellness? Matthew Ricard, a molecular biologist who turned a Buddhist monk, he says in a very briefly, happiness is not a mere pleasurable feeling. It's not a fleeting emotion or a mood. It's an exalted state of being. What is happiness? Happiness in simple words is a state of being happy, vibrant and upbeat. So now we have to understand how it all can be done. Many researchers, now what is happiness? Many researchers and studies have identified a number of attributes that correlate with happiness. As probably I mentioned earlier also, Ranjan Saab also said, relationships, social interactions, extraversion, marital status, employment, health, freedom, optimism, endorphins released through physical exercise and other ways, religious pursuits, income and proximity to happy people. These are the general, the broad issues. Is happiness related with genes? If your father used to be very happy, then does it affect your happiness also? Now there is a lot of research. David Lycan, he studied many twins being brought up in a similar environment and being brought up in different environments. And then what he concludes a very interesting finding. He said that about 50% of one's happiness depends on one's genes. 50% of your happiness depends on your genes, the general attitude of the family, the general attitude of ancestors, and about 10 to 15% happiness is a result of various measurable life circumstances variables. Socioeconomic status, marital status, health, income, what type of society, you are there, how are social securities, how is general environment, do you feel helpless, do you feel, under compulsion, you cannot speak what you want to speak, and a lot many factors, 10 to 15% happiness depends on that factor. And what is important in this subgroup, what I am talking about is that about 40% is the combination of such factors which are in your hands. That your own efforts, your own thoughts, your own pondering, retrospection, exploration, that what makes me happy. Everybody's factor of happiness, varies. I may be happy when I read any, I had gone for out somewhere and Holi we had gone out of the country somewhere. I purchased a book at Delhi airport. That was Never Land. Namita Gokhale has written it. I just read, when you turn over the pages of a book, then I read that it's about the Himalayas, how there, and it's about aging. I tell you, I really felt so happy. I finished it. 5-7 days Delhi, you come very late. I had gone with family, my elder son and his family, and we both. So now that makes me happy. If you read a poetry, somebody makes a music, somebody Gopalji does plays and theatre and all that. So everybody's factors for happiness may vary, may be different. But nevertheless, are you making a conscious choice? Are you cautious about it that let me do something which is very dear to me? So now this 30% is our area according to this system. Now what makes us happy? Many believe that a lot of literature is there. Christianity says what are the factors of happiness. Buddhists, they have their own sets of this thing. In our scriptures, Gita says there are 3 kinds of happiness. There are 3 kinds of human beings. There are 3 kinds of food. So this is all related. Gita I will be quoting later. Friends, a giant yes, of course. Your friends make you happy. Social networking, not the 200 WhatsApp messages. The social networking here means as you are sitting here, you are meeting here. We just wished Holi and we felt happy meeting the people, after so much time at least I am attending this thing.
The study of the University of Illinois by Diner and Martin Seligman. Martin Seligman is considered to be the father of positive psychology. Earlier, the psychologists and counselors, they used to study those cases who were having depression, suffering, anxiety, stress. But this group of psychologists, they started, the fellow is very happy, what are the causes? We can recommend to others. So he is one of those people who started a movement in America, and then of course, though our setup, it has been since ages, what makes us happy, So now what he said that the strong ties to friends and family and commitment to spend time with them leads to the highest level of happiness and minimum depression. So the family and friends and community, belonging to them, being amongst them, connecting them on regular basis is another external factor which can affect our happiness. Now, we just saw that our explanation said that happiness, we do not underrate any duty as much as the duty of being happy. Now, American Constitution says, the US Declaration of Independence drafted by Thomas Jefferson says that we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. It's a right in American Constitution that pursuit of happiness is an inalienable right, the fundamental right, the basic right of every citizen. So now, why does happiness matter so much for our wellness? I tried to connect in the beginning that Sukh and Kalyan, Bhadrani, the whole gamut of values, emotions, feelings, associations, thoughts, all these which make a life really worthwhile, which make life upbeat and enthusiastic. So now it says that happy people live longer. So many studies. Many studies. They live longer, healthier lives, more fulfilling and meaningful lives, a life full of love, contentment and purpose. So happiness, you can understand that it does affect our wellness. If you are in a happy mood, you will go. Someday you are at a low, you will not go to, you are going to yoga, you are going to exercises, you are going for walk, you are going to meet a friend, that sort of thing. So what matters? That happy people definitely live longer, better lives. Not many studies, we all know it. Recently a book came, Ikigai, it becomes such a great, bestseller. So they related it with your food. Gita also relates with food. Upanishads say, as is the food, so is the man. So now, happiness is not only benefits our bodies, it also crucial for mental and emotional well-being. When we are happy, our brain releases neurotransmitters like dopamine and serotonin, often referred as the feel-good chemicals. These not only elevate our mood, but also improve our cognitive functions, boost our creativity and enhance our resilience in face of adversity. Now today, since ages, almost in all the societies, the kings, commoners, philosophers, saints and sages, they have all bothered about what's there which can make people more happy, more satiated, more contented, more harmony, love, affection, respect in society. So now today there is a trend, a lot of books are coming. When I was naming my book, whatever I gave title to that book has already published. If you just open even this book, मेरी किताब का नंबर तीसरे पर आता है, चौथे पर आता है, The Art of Joyful Living, sir. So now when I was aiming the first book, The Happiness is Choice, used to be happy. But I came to know that Dalai Lama साहब की तुरंत book आ गई थी उसी टाइटल से. Then I changed my title कि भाई हमारी किताब का कौन पूछेगा, Dalai Lama has written a book on happiness. So now a lot of things are going on in happiness. In our setup, as many of you know, all of you know, that the main objective of human being in our setup of cultural and spiritual values were, they call it 4 purusharthas, 4 objectives. What is that? Dharma, earth, calm and moksha.
So that means all of these are aimed at attaining happiness, joy, and a sense of fulfillment here and hereafter. When they talk about moksha, moksha is what? Getting free from all sorts of bondages and meeting with the great spirit, the God, being one, being part of him. So now Dalai Lama says, Aristotle said, happiness is the summum bonum of life, chief good of life, the most important objective of life. Dalai Lama says, as you know, happiness is the purpose of life, and it comes not from desires, it comes from your own actions. If you believe in that gene theory, then he told 15% factor that and 30% are your own efforts, your own endeavors. No doubt, happiness is very important objective. Now, how to achieve happiness? Sarve bhavantu sukhina, this was taught in this land. Let everybody be happy. Let nobody suffer. Then what are the important factors which constitute a happy state? In Mahabharata, I am very fond of quoting this slok. In Mahabharata, there comes an instance where it is said that arogya, unread, you will catch many of the words, so I will be translating. Arogya, unread, avipravasa, sadvi manushya sa samprayoga, swapratyaya vrittir, abhitvasa, shad jiva lokas sukhamilana. इस जीव लोक के 6 सुख हैं. क्या है? Perfect health, being free of any type of debt, living with your kith and kin, अपनी family के साथ, company of virtuous people, this is highly exalted in our society, and reliable means of livelihood and absence of fear. Arogya, unread, abhipravasa, living with your kith and kin, with your family. सद्भी मनुष्य, सज्जन लोगों के साथ सद्भी मनुष्य सा संप्रयोग, उठना बैठना, बातचीत करना, रिलेशन होना, संबंध होना, कनेक्टेड होना, that sort of thing. स्वप्रत्यावृत्ति, your own profession, your own livelihood depending on your own efforts. It's not that somebody will give you something, then you will get that particular. स्वप्रत्यावृत्ति and abhitvasa. Many of the criminals they are very afraid of their lives because they are dealing in those things. So abhitvasa, having no fear at all in your daily existence. So these are 6 factors. And role of good company, sadvi manushya sa samprayoga. Tulsi Das in Ramcharitmanas says, many of you read Sundarkand, you must have gone through this doha, it's very important. Tat swarg apvarg sukh hariya tulai sang tulna tahi sakal mili jo sukh lo sats. He says that all the comforts, joys and riches of the world and beyond, tat swarg apvarg sukh, apvarg is the earth, prithvi, planet. If both are kept on one scale and the company, the importance of company of good people on other scale, the other one will still be heavier. The message is that being with good people, being with good people, let's say also a very very strange things. I read somewhere कि somebody asked कि भाई क्या हाल चाल है आपके? He told I am very very happy. अच्छा, you are very happy. Why? It happens that whenever I meet a good person, then I feel very happy. But how do you meet daily good person? Look here. If I read Bible, I am meeting the Christ. If I am reading Quran, if I am reading Gita, I am meeting Lord Krishna. His thoughts are biased the way you believe into these things. So now, this company sort of thing, it's really very crucial, very important. And I think it's one of the most important determinants of happiness as I look at it. Now, there is another instance. Ranjan Sahab told, I am skipping a little, that the happiness is something from within. It depends on your own mental makeup, your own fiber, your something, what is the inner being of yours, There is a instance, there is a very popular story about Maxim Gorky. Maxim Gorky was a very famous Russian novelist, and some organization from United States of America, they invited him for talks and all that. Then they took good care. He was made to visit so many entertainment centers and tourist spots and all that.
As soon as the visit was proceeding, he looked very sad. Then organizers thought there is some issue of protocol or what. Then ultimately they asked him. And he replied that he is feeling very disillusioned as America happens to be such a dull place that people need so many tourist spots and so many means of entertainment. Only those people who are joyless and empty from within, only they go for these external stimuli. In fact, these external stimuli are very short-lived. Many of us many times do that also. So now, that is something, what he says that the greatest happiness lies in being what one really is and understanding one's own factor of happiness. What makes you happy? What can make you happy? What made others happy? Maybe you can derive a cue from that, as Tulsi wrote, and so many things. And Mahabharata I quoted. Now, to really give you an idea about, if you still go, the higher dimensions, higher horizons of happiness, then I remember you might have heard the name of, Herald Maslow, Abraham Herald Maslow. He created a pyramidal structure of needs. He said that the lowest needs are of physiological needs. Food and oxygen and protein and all those things, the waste disposal and whatnot. These are the physiological needs, your survival needs. If it is completed, then the next comes, the sense of security and safety. Then you think about that. If that is achieved, then the next comes the love and belonging. You want to connect to the bigger groups, good people, nice people, attractive people, learned people, whatever you call it. And then is the self-esteem, how much respect and dignity I enjoy life. These are four needs. He calls them the deficit needs also, because they do cater to some requirement of a person, of a human being, an accomplished human being. What is the last one which interests people? Many of you have been at that stage and still you are. He calls that self-actualization. Self-actualization is achieving something, not getting satisfied with survival. I mean, the riches, prestige, power, this, that. Why do people, you will find many 90 plus people, somebody got Nobel Prize this year. 90 plus people, many wrote magnum opuses, a very, very important book. What makes them go forward? What's that? He said that the self-actualization. So this happiness plus wellness, happiness and wellness, it should prepare us for self-actualizing. Self-actualizing in brief is an organism should achieve what its potential is. If you are a poet, you should try to write the best poem. Maybe there have been so many better poems. Shakespeare wrote so much, in a way nothing remains to be written. But every year in literature, Nobel Prize is given and so many things are given. So now you must realize your potential, and when you reach that stage, that corresponds to my mind with what Patanjali wrote, Ashtanga Yogas, this thing. You do asana, pranayama, and you do dharana, then dhyan, that is meditation, and the samadhi. That is, this hierarchy you wrote me, happiness and joy, its hierarchy is like this: happiness, joy and bliss. So now, here what he says, Abraham Maslow, he says that at that stage, making some such, there is a lot of restlessness. Somebody just, I just remembered, नहीं चाहता साथिया जानो सागर फकत तुझसे बेखुदी मांगता हूँ. The restlessness to do something, the restlessness to be something, the restlessness to do something great. Why do the age we are in, we are also sitting for 7, 8 hours, 10 hours, we feel tired. आलोचना साहब सभी बात हो रही थी, कभी कभी लगता है बेकार इसका क्या, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ इट. इतनी देर बैठते हैं, फिर पब्लिशर को रिंग करो, फिर उनको लेटर भेजो, फिर उसको एडिट करो, फिर then the book has come, selling, not selling, But what makes you go ahead? So self-actualization, where
you achieve such a status, you achieve such a happiness that not much can be added to it, not anything can be subtracted. That's an ideal situation, of course. But the way I compared, that Patanjali is this thing, okay, it's like that. So that is the ultimate potential of happiness and wellness. When you are mentally ready up to that extent, I remember a boy many years earlier, he went to, till then he was the youngest to scale Everest, Arjun Vajpayee. So when he was chief secretary, he was given Yashbhati, etc. And I had called him in a program, invited him. So he told me that the last night, as this many of us were knowing, that last night when they at 9:30 or 10, when they scaled the last climb, then almost they climbed for the whole night, and at 5 or 6 in the morning, when the first sun rays come, then quickly they put their flag and all that, and then just scaled, because around noon or so again the weather becomes so bad about it. He told that somehow or other he was not he was not in a very great state of health, but he went and he started. Then somehow he was the only son of a captain in army, but it was a very great decision that 14-year-old was sent to go to Everest. But nevertheless, then he told his Thapa कि मैं not feeling totally ready. Then he said, look here, who asked you to come to the Everest? You took this call. Now, my dear boy, don't listen to your body. Listen to your mind, listen to your resolve, listen to yourself, listen to your spirit. Chalo. So something like that is the self-actualization. So that's the limit of our happiness and wellness. Now I think your time is, I don't know what is there. Somebody asked to Bertrand Russell, what makes you most, what according to you is the, is the objective of life. I read somewhere, Amrita Pritam has written this instance. Her words were, I am interested in 3 things. What is that? मोहब्बत की तलाश, इल्म की जुस्तजू, और दुनिया में जो इतनी ज्यादा सफरिंग है, to play a little role to mitigate that suffering. I mean the quest for love, pursuit of creativity, and to reduce the whatever little part I can. Just R.W. Emerson says that, well, he says it's a different theory which I am not going to speak here. He says that happiness is not the objective of life. Objective of life should be to become a person of purpose, to become an honorable person, to achieve and to do something which makes a difference to the society and to your feeling itself. So now I think this is the some basic points which I tried to enumerate. Though about happiness, each factor, one can speak on health, one can speak on creativity. There are so many factors. But one thing which we should remember always, right? It's not that what I told and Ranjan Sahab told it depends on you, so you can choose to be happiness. No, a lot of circumstances determine your happiness. You are not on an island. You are part of a totality, existence, a society, a community, a country. So now what to do? They say that life is a journey. We should always remember that life has its ups and downs. It has joys and sorrows. It has its smooth and rough patches. So now something should be developed to face the situation. When extraordinary situations arise, then how to face that? I remember a poem of Ramdhari Singh Dinkar. What he says, he addresses the life. He says, "ऐ जीवन, जिसने तुझे विश्व का उपहार दिया है, the difficulties, the problems, the issues, जिसने तुझे विश्व का उपहार दिया है, उसी ने मुझे गीतों की सौगात दी." I write poems. जिसने तुझे विश्व का उपहार दिया है, उसी ने मुझे गीतों की सौगात दी है. तुम सोच रहे हो जीवन को, ये एड्रेसिंग लाइफ, तुम सोच रहे हो तुम्हारा विश्व पराजित नहीं होगा,
मैं सोच रहा हूं मेरे गीत नहीं हारेंगे, मैं सोच रहा हूं मेरे गीत नहीं हारेंगे। So ladies and gentlemen, we should create our own songs, our own defense mechanisms, our own strengths, our own area of space where we can be different from other people. Other factors that make life a saga of happiness and wellness, all of us know, are love, affection, kindness, compassion in our thoughts, words and deeds. Mother Teresa said, there are no great acts. There are only small acts done with great love. So now, what happens, once I mentioned, that Gita has 3 kinds of happiness. Lord Krishna says that Sattvic, Rajas and Tamas. I am not going to delineate that because you can understand from the words. Okay, the Tamas also makes some people happy, but that happiness is the lower kind. Rajas, the power, prestige, kings and this and that also makes happy. Many of us it made happy. You still, when you look at it, looks happy that definitely that fellow is enjoying and exercising a lot of power, a lot of prestige, a lot of dignity in society, a lot of leverage, So now, but Gita, Sattvic, what is Sattvic? Then again the same thing comes. Your riches, your wealth, your new house, your new cars, what has happened? The society or the evolution of human being has become very competitive. So whatever you achieve, somebody has achieved more than that. So we are trapped in this game of more and more. You want more than your neighbor, you want more than your colleagues, you want more than even your siblings. So in that trap, ladies and gentlemen, that's not going to make us happy. Things are needed for your comfort, for your prestige, for your other things. But that's not be all and end all. Happiness or wellness is something else. That is my own point which I want to emphasize. Another point, as they say, Gita says, Yatadagre Vishmeva Paradame Amirtotvam Tat Sukham Sattvikam Proktam Atmabuddhi Prashadam. He says, Lord Krishna, dekho, whatever is difficult, whatever it looks, bitter, whatever needs a lot of endeavor, ultimately it's going to be a matter of joy, a matter of bliss. And what is matter of joy? What is matter of bliss? Something which touches your intellect, which touches your soul. So that's the permanent side of happiness. Before I conclude, I would like to list other factors which all of us health, marriage, friendship, creativity, sense of gratitude, being with nature. I just read being with nature. Sharanji has come. So, S.W. Thoreau has written that I went for a walk in the morning and returned taller than the trees. So, wherever you go to forest, you go to park, you go to in such situations, you after some time you do think about yourself. Otherwise, we are just in that race that automatically things are happening and we are living life by instincts, right? So now, what I want to conclude is this, कि life definitely is difficult. बहुत मुश्किल है कैदे जिंदगी में मुतमईन होना. बहुत मुश्किल है कैदे जिंदगी में मुतमईन होना. कफस भी एक मुसीबत था, चमन भी एक मुसीबत था. So now I'm leaving other points because it's taking time. And somebody from here told the sharing, So now what they say, not many people quote Shankar Prasad, but Kamaini is one of the wonderful, epic. What he says in 2 words. कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी करो. Thank you very much. Siva Sahab, I'm really grateful that you listened with so much interest and so much intent. And I was not feeling well, but I decided to come, and I'm feeling really very, very happy. I couldn't opt out from this talk.
But nevertheless, I wish you all great happiness, wellness, achievements, and even self-actualization. Thank you very much. Now another small request, if you are keen about the Oxford Happiness Questionnaire. It's one sheet, both type. There are 29 questions. आपको 1, 2, 3 type marking कर देना है. Then you can know your happiness index. So now this is being distributed. I think it should be distributed in case you are keen about it. And then when you get the last score, then tell me. Then I will be telling you whether it is happy, or very happy, or pretty happy, marginally happy, most happy, supremely happy, or not happy. I'm not happy. I did not want to say that. But anybody who is here, he has the potential and he knows about happiness, they are happy. So now it is being distributed. Kindly read it, little carefully, and don't think much. There is no right and wrong answers. Even today, if you are doing exercise, and if you do after 7 days, you will write differently. And the purpose of this exercise this questionnaire was basically, you can judge and measure your happiness from time to time. Thank you, Gopalji, Sharadji, and Ranjan Saab, and everybody of you. Thank you very much for inviting me. I felt good. Thank you very much. Sir, there is one question. Can you tell us what is the reason for India to be so unhappy? I think, that from there I started. Dear friend, India is unhappy only because a lot of matrix has been added which measures the social securities of different developed countries, which measures the equality in income and status. So our many age-old evils हैं, they many times drag, probably they drag are the foreigners who are doing that, those elements, they do not give importance to that. So that's that. And really, look here, even this exercise you are doing, no exercise can be, totally without any prejudice. The fellow in Oxford who designed this thing, he has his own concepts, what is the happiness. So it gives more for appreciation, enthusiasm, support, social security, so many things. Thank you very much. Sir, I have one more question. So how can the government help in improving the level of happiness in our country? What are you doing? क्या पूछा आपने? मैंने कहा how can the government help in improving the level of happiness in our country? और देखिए, I think all of us, even you have to think and I have to think about it. Look here, the general level of education, general level of health, general level of dignity. You all know that British police calls every citizen sir. So a lot of humiliation, even you and we are in have been in very exalted positions. But if you have some work from somewhere, I'm not talking not only government officers, even the private officers. There are also people behave almost the same way if he has something to facilitate your life. So I think we have to go a long way in which this poverty is also, social factors are there. The greatest factor for satisfaction and meaning in life are health and education and social security. There they can do. Though infrastructure is being improved, a lot of, if you go to Sanjay Gandhi or any big earlier, those who used to meet in rural areas, only there, their markets, doctor and all that, now they are also coming together. So there are a lot of mobility is there. But still, must be going out of the country and you see how they are, even the smaller countries, so many other countries, which have done so much. Sir? No voice. To make you happy. धन्यवाद जयशंकर मिश्रा जी। देखिए ये हैप्पीनेस का मोमेंट है। दो मित्र लोग मिले हैं। शरद प्रधान जी हमारे वाइस चेयरमैन हाजिर हो चुके हैं। कहीं आज इलेक्शन का जमाना है, मैं समझ रहा हूँ आपकी
इससे पहले कि मैं चंद्रशेखर वर्मा जी को कहूं कि वो अपना जो उन्होंने डिसाइड किया है, कोई एक्टिविटीज डिसाइड करी हैं, और आप लोग तब तक इस फॉर्म को जल्दी भर लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बीच का जो गैप है, ये हम कुछ खुशियों की बात कर रहे हैं, तो खुशी का माहौल भी होना चाहिए। रूपाली चंद्रा हमारे बीच में है, जब तक कि चंद्रशेखर जी तैयारी करते हैं, आइए रूपाली जी और सुनिए इनको, देखिए क्या कहना चाहती हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान देंगे, कान इधर लगाइए, कलम उधर चलाइए, निश्चित तौर पे आपको कुछ खुशियां मिलेंगी इनकी जुबान। आइए। सबको नमस्कार, धन्यवाद गोपाल जी। एक छोटी सी कविता है, मुश्किल से 2-2.5 मिनट की। रमई काका बहुत अच्छे कवि रहे हैं और काफी मजाहिया कुछ उन्होंने लिखा है। एक कविता है उनकी अवधी भाषा में, और उसका शीर्षक है हम कहीं बड़ा ध्वाखा हुएगा। तो वो हम सुनाने जा रहे हैं आपको। हम गए याक दिन लखनऊ, कक्कू संजोगन असपरिगा, पहिले पहिल हम सहा व्याखन, सो कहूं ध्वाखा हुईगा। जब गए नुमाइश देखे हम, जहां कक्कू भारी रहे भीड़, 2 तोला 4 रुपया माँ, हम बेसहा सोने के जंजीर, लखी भई घरे 3 गल बहु, मुला 4 दिनन माँ रंग बदला, वो कहीं की तीतर में आयो, हम कहा बड़ा ध्वाखा हुईगा। मोछन का कीले सफा चट, मुंह पाउडर और सिर केस बड़े, तहमत पहिरे कंबल वाढ़े, बाबूजी याके रहे खड़े। हम कहा मेम साहिब सलाम, उन बोले चुप बेटन फूल, मैं नहीं हूं साहिब हूं। हम कहा फिर ध्वाखा हुएगा। जब गए अमीनाबादे हम, कुछ कपड़ा ले बजाजा माँ, माटी के मूरत सुगड़ बड़ी, जहां खड़ी रही दरवाजा माँ। समझा दुकान के मलकिन है, सो भाव ताव पूछे लागन, या कह बोला यहाँ मूर्त है। हम कहा बड़ा ध्वाखा हुईगा। 10 गए दुकाने देख, जहां मेहराऊ याके रही खड़ी, मुंह पाउडर पोते उजर और साड़ी पहने सुगड़ बड़ी, जाना माटी की मूर्त है, सो साड़ी पर जब हाथ धरा, झटक मकोड़ी खखवाई उठी। हम कहा फिर ध्वाखा हुईगा। तो ये थी उनकी कविता। आपने अपने ये हैप्पीनेस का पैमाना कंप्लीट कर लिया? हाँ, इन्होंने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि अब मैं मंच सौंपने जा रहा हूं चंद्रशेखर वर्मा जी को। ये आपके साथ कुछ एक्टिविटीज करवाने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने अपने अपने फॉर्म भर लिए हो, अपना पैमाना देख लिया हो, तो उस खुशियों में हम और चांद लगाना चाहते हैं, और ये अब मंच सौंप रहे हैं हम चंद्रशेखर वर्मा जी को। देखिए, हमने बहुत अच्छा लेक्चर सुना मिश्रा जी से खुश रहने के बारे में। तो जो मुझे लगता है कि खुश रहने का एक जो सबसे आसान तरीका है कि आप अपना बचपन जीवित रखें अपने अंदर। अगर आप जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे खुशी के ना खुश होने के कारण होते जाते हैं। बच्चा जो होता है, मासूम होता है, बहुत खुश होता है। धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें ना खुश होने के बहुत सारे कारण, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की चीजें हमारे जहन में आती हैं। तो आज जो मैं एक्टिविटी करने जा रहा हूं, उसमें कुछ आपका बचपन, आपका जो थोड़ा सा एक प्रतिस्पर्धा, एक खेल की भावना, उसको मैं थोड़ा सा जगाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक गांव पे 2 बच्चे थे, बहुत गहरे दोस्त थे, और देखिए आपने सर सबको बिजी कर दिया है 15 मिनट के लिए। मैं रुक जाता हूं, मैं कहता आप लोग कर लीजिए, भर लीजिए। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा जो आप सोच रहे हैं इतना सिंसियरली भर के कि आपको कोई
नोबेल प्राइज मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दिल को बहलाने के लिए बहुत अच्छा है, फल नहीं तो छोड़ देते हैं, ज्यादा फील हैप्पी करेंगे। मतलब खुशी को नापने का तरीका हो तो जितने ही आप पति बैठे हैं बहुत खुश होते हैं। कोई पैमाना नहीं है, खुशी को नापने का कोई पैमाना नहीं। और खुशियों की परिभाषाएं भी अलग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन असल में ये क्या होता है कि फॉर्म को देख के आदत होती है हमारी, इसको भर डालो। वर्मा जी आपकी बात सुन के हम तो खुश होंगे, मिश्रा जी शायद अनहैप्पी हो जाएंगे। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पहले आप अपने मशवरे से तय कर लीजिए किसको हैप्पी करना चाहते हैं। He can't afford to be unhappy. और वो तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि your happiness is not dependent on others. So anyways, अभी जो हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, मुझे कई चीजें मैंने सोची कि किस चीज से हम सब इन्वॉल्व होते हैं। इंडियंस के साथ 3-4 चीजें हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें एक तो रिलीजन है, हम बड़ी जल्दी इन्वॉल्व जाते हैं उसमें। दूसरी पॉलिटिक्स है, अभी आप 5 मिनट का वक्त दें और दिखेगा कि डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि 400 पार होगा कि नहीं होगा। तीसरा क्रिकेट है, जो आप देख रहे हैं कि आईपीएल का फीवर चल रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि एक यूपी के लखनऊ के लड़के ने 155 की रफ्तार से गेंद फेंकी। और चौथी चीज जो हम सबको जोड़ती है वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड फिल्मों से हम जरूर, एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो हर जगह होते हैं, बट मुझे लगता है कि फिल्में हम सबको जोड़ के रखी हैं। तो मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं जो फिल्मों पे होंगे, और जिस तरह से आप लोग ग्रुप बना के बैठे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नई टीम्स बनाने जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा हिलना पड़ेगा उसके लिए। सो आई एम गिविंग यू नंबर्स, प्लीज रिमेंबर, और ये मत कहिएगा कि हम जहां बैठ गए वहां बैठ गए। लखनऊ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जहां बैठ जाते हैं वहां बैठ जाते हैं, तो ये मत करिएगा, थोड़ा हिलने डुलने के लिए तैयार रहिएगा। सो आई एम गिविंग यू नंबर, और बच्चा बनने की शर्त मैंने आपके सामने पहले ही रखी है। सो मैम 1, डोंट फॉरगेट योर नंबर्स, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, विपुल जी 6, अनुज जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, अस्थाना जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, so 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3. All ones, please stand up. All ones. मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला कि नंबर वो भूल गए। आपका 1 घंटे का लेक्चर किसी को याद होगा? आई डाउट। चलिए, ऑल वंस प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, ऑल वंस प्लीज स्टैंड अप, ऑल वंस प्लीज स्टैंड अप। इसमें कोई बात नहीं होगी इसमें। अच्छा, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए और इस टेबल बैठ जाइए। ऑल वंस प्लीज कम एंड सिट हियर। All 2s here, all 3s here, all 4s in this area, all 5s in this area. जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा उठ जाइए। Number 2, team number 3, team number 4, team number 5, सर आप लोग team number 5 में और team number 6 हो। Okay, very good. Okay, yes, ready? All right, attentive रहिए बिल्कुल। All right. अब पहला राउंड ये है जिसमें कि मैं एक
फेमस डायलॉग पूछूंगा, आपको बताना है किस फिल्म का है। हम टीम 1 से शुरू करने जा रहे हैं। टीम 1 सर, ये ट्रायल ही होगा। ओके, रेडी? और पास 4 आगे 4 ना, गोपाल जी 4 ना। स्कोरिंग 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 के लिए भैया स्कोरिंग करते हैं। पेपर पेपर दे, पेपर ओके। और आप सबसे गुजारिश है कि मोबाइल मत खोलिएगा चेक करने के लिए, इतने भी बच्चे मत बन जाइएगा। ठीक है, ये मदद कर देंगे। आपको मैं बताऊंगा तो आप नोट कर लीजिए। ओके, टीम 1। अच्छा, फॉर कन्वीनियंस से टीम के नंबर चेंज कर दे रहा हूं। ये टीम 1 है, फिर वो टीम 2 है। अरे दिस मास्टर्स डिसीजन इज फाइनल। 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉर कन्वीनियंस से मुझे भी याद रहेगा। ऑलराइट, साइलेंस, रेडी? Question number 1, dialogue number 1 for team 1 on your screen. ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। नहीं, ये टीम 1 को बताना है। साइलेंस प्लीज, डोंट प्रॉम्प्ट। हाँ जी, हाँ जी, योर आंसर। कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। थोड़ा मैं स्टाइल में बोलूं, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। Alright, time up. Team 2. Zanjeer is right. Amitabh Bachchan to. नहीं, हो गया। Quiz master decision is final. हो गया। Team 2 10 points. Team 2 10 points. अमिताभ बच्चन साहब ने प्राण को बोला था। कोई बात नहीं, अभी आओगे मौके आएंगे। Team 2 आपका डायलॉग। Team 2 आपका डायलॉग, ये डायरेक्ट डायलॉग है। जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं देखते। टीम 2 वक्त इज राइट, 20 points for टीम 2। ये फिल्म वक्त का डायलॉग है। चिनौर सेठ, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं देखते। ऑलराइट, टीम 2 को 20 points। और टीम 2 में मेरी पत्नी बैठी हुई है, लेकिन हमारी इतनी बात नहीं होती कि हम ये सब शेयर करें। हमारे देखिए आप इनको बहुत परेशान कर रहे हैं आप लोग। टीम 3 सर, आदत है, इससे ज्यादा होता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। टीम 3 राइट, रेडी? ओके। अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिर बताइए, दबंग इज रॉन्ग। टीम 4 बॉडीगार्ड इज रॉन्ग। टीम 5 वॉन्टेड इज राइट। वॉन्टेड इज राइट। 10 points for टीम 5। बस आप ना ले। और प्लीज एक टीम से एक ही आंसर चाहिए, गेस मत करिएगा, कंसल्ट करके आंसर करिएगा। राइट? ओके, डायरेक्ट फॉर टीम 5 टीम 4। टीम 4 आप कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। यादव की बात इज राइट, 20 points। कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। ऑलराइट, टीम 5 योर डायरेक्ट। दोस्ती का उसूल है मैडम, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया इज राइट। एंड टीम 6
योर डायरेक्ट। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सनी देओल ठीक है? दामनी इज राइट, दामनी इज राइट। ओके, 20 पॉइंट्स फॉर टीम 6। आप लोग थोड़ा या तो इधर आ जाए, इसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये टेबल ज्वाइन कर लीजिए, आगे साथ में। Fine. So end of round 1. Can we have the scores? Hello. Team 1 is 0. Team 2 total 30 points, 3-0. Team 3 0. Team 4 20, 2-0. Team 5 30, 3-0. Team 6 20, 2-0. Okay. All right. अब सुनिए, your name. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, मैं रूल्स एक ही बार बताऊंगा। अभी इस राउंड का नाम है चेहरे पे चेहरा। मैंने दो चेहरों को, एक हीरो के और हीरोइन के चेहरे को मर्ज किया है, मॉर्फ किया है। आपको दोनों के नाम बताने, ठीक है? एक के नाम बताएंगे। हाँ, स्क्रीन इतनी है। देखिए, आप जहां बैठे ये वास्तु के हिसाब से अगर गड़बड़ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो आपको दोनों चेहरे बताने, दोनों बता दिए तो 20 पॉइंट, एक बताए तो 10 पॉइंट। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यानी टीम 6 से शुरू करेंगे। और सुन लीजिए, अभी नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ। अभी शुरू नहीं हुआ सर। Now, so careful in answering, right? So team 6, your picture coming up. Team 6. Okay, team 6. Team 6. Okay, team 6. आपको बताना है ये दोनों चेहरों को। Kareena and Shahrukh are absolutely right. Very good. 20 points for team 6. Kareena Kapoor and Shahrukh Khan. Team 5. आपकी पिक्चर मेल एंड फीमेल। जीनत तमान एंड जीनत तमान इज राइट। आधा दे देंगे, देखिए जो हीरोइन है उसी कॉन्टेम्परेरी हीरो भी होगा। इसी का वन आंसर प्लीज, फाइनल बताइए। आपस में कंसल्ट करके एक आंसर बताइए। ये बता रहे अच्छा, वो आंख देख रहे हैं। फिरोज खान जी ने Is that right? Yes. Is that the last answer? Yeah. Correct. 20 points. It is Firoz Khan and Jeevan Tawar. Okay. Team 6-5-4. Team कौन आती है? Okay. अब जो है, हाँ जी, I want one answer. हाँ। बस Okay, I want your answer now. Time up हो रहा है। बोलिए, जल्दी बोलिए। जल्दी जल्दी। All right, not answering?
नहीं तो टाइम आप हो जाएगा। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टीम नाउ। Retd Mishra is wrong. Team 3. And okay, I give it 5 points. Katrina is right. 5 points for team 3 and half like incorrect. Incorrect. Team 1. Team 6. Okay. It is no only 5 points for team 3. It is Katrina and Amir Khan. Okay, never mind. Okay, fine. इसको पहचाना तो पहचान ली। टीम 5 के है, टीम 6 ये है, टीम 5 आपकी थी, हो गया आपका टीम 4, टीम 3 आपका डायरेक्ट, टीम 3। ये तो भैया वो है तो टीम 3 को बोलने दीजिए। अरे चुप नहीं, यहाँ पर नंबर नहीं है। अरे चुप नहीं है, इसको बोलने दीजिए। कॉन्टेम्परेरी एक्टर्स होंगे तो ये हीरो हीरोइन के साथ काम किया होगा, ऐसे ही होंगे। करिश्मा एंड गोविंदा इनकरेक्ट। टीम 2 टीम 2 करिश्मा एंड सैफ गलत। टीम 1 ओके, विनोद खन्ना एंड रेखा इज राइट। 10 points. This is Vinod Khanna and Rekha. Team 1 10 points. Team 2 आपका डायरेक्ट। Team 2 your direct. Vinod Khanna and Rekha. Team 2 ready? Team 2 pass है। 20 points. Ritik and Aishwarya is right. Ritik and Aishwarya is right. Team 1 आपका क्वेश्चन है। Team 1 देखिए वो एक्टर्स हैं जिन्होंने साथ काम किया हुआ है। Devanand and Babita have never acted together. Incorrect. 10 points आपको मिलते हैं देवानंद पेश करने को। Incorrect. 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 Okay. No. It is Devanand and Rakhi. Okay. All right. ये दो एलिमेंट रह गया। Okay, next round. अब this is going to be interesting round. हम टीम 1 से शुरू करेंगे। स्कोर बता दीजिएगा। स्कोर सेकंड राउंड टीम 1 22-0, टीम 1 22-0 और टीम 2 20-0, टीम 3 5 और 4 जो है वो 0। ये टीम 2 को एक डायरेक्ट मिला है। टीम 2 ने 20 कैच किया था। इस राउंड में बता रहे हैं। तो इसी राउंड का है। वो पास हो गया था। अच्छा, टीम 5 इस राउंड के 22-0। टीम 5 आपके भी 2-0 20। अभी श्वेता जी आपको मेरे साथ ही करना पड़ेगा। आइए। ओके,
अभी मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं, उनका मौका आ गया है, उनको गाना गाने का मौका मिलेगा। और मेरे पास कुछ चिट्स हैं, हर टीम को एक चिट पिक करनी होगी। मैं पहले टीम 1 के पास आऊंगा। इनके पास 1 मिनट का टाइम होगा, आपकी स्टॉप वॉच और आपको जो थीम मिलेगी, आपको उस थीम पे जितने गाने आप गा सकते हैं, पर एक लाइन गानी पड़ेगी, बोलनी नहीं होगी, ठीक है? और इनको एक माइक भी दे दीजिएगा, माइक को। आप जब चिट उठाएंगे मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको चिट बता के एग्जांपल दे दूंगा कि इसका कौन सा गाना होगा, राइट? ओके एवरीवन प्लीज, हाँ स्टॉप वॉच जब मैं कहूंगा ना कौन सा साइलेंस। ओके सर आप बताइए और मुझे दे दीजिए। ओके मैं टीम 1 की थीम अनाउंस कर रहा हूं। सॉन्ग्स विद नेम्स ऑफ कलर, यानी कोई दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता। हरी 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 चूड़ी उड़ी। गाना पूरा करिए। हरी हरी चूड़ी कैसे शुरू होता है? पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ी। ओके फाइव और नीले वाले का देखो। नीला हो गया नीले नीले अंबर पर चांद आए, हम वाले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, है ना? और इतना कमाल कर गरम इसमें ढल जाएगा। और Eight songs multiplied by 5, your score is 40. Well done. तालियां बजाते रहिए टीम सब के लिए। सबके नाम आने से बनो। मुंबई शहर आज का शहर है, लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शहर मुंबई शहर हादसों का शहर, बरेली की बाजार में, बम्बई से गई पूना, पूना से गई जयपुर से निकली गाड़ी, धक धक बोले ये है मुश्किल जीना यहाँ। मुंबई में जाए मैं दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ आया। हाय 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 हाय। 7 टाइम आउट। 7 songs 35 ओके 35 सात गाने गाए हुए, तालियां बजाती है प्लीज। आपका सिंगर कौन है? माइक 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 माइक। सिंगर कौन है? राजेश जी। ओके हमारे सिंगर आप ही हो। पानी लाल छड़ी में धान खड़ी। ओके 3 सर टाइम भी एक्स्ट्रा मिलेगा मैं। हाँ कांटों से खींच के दया आंचल कांटा आंचल है अजय कपार सर नहीं ये सारा गाना है, बोलना और गाना भी है। पायल की झुमका मेरे पैरों में घुंघरू बंधाए थे, तो गाना पड़ेगा मेरे पैरों में घुंघरू बंधाए थे, चूड़िया चूड़िया जो आए हाय तेरा झुमका 5 मेरे हाथों में 6 और जल्दी सेवन हो गया। ओके 7 songs 35 points। बच्चों 7 songs 35 points। 7 songs 35 points। 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 35 poin
द नॉइज लोगों के नाम होने चाहिए उसमें। मेरा नाम राजू, शाम तेरी बंसी काली रात। मीरा भी है, मीरा कभी कोई की भी बोल राधा बोल संगम गाती नहीं। चांदनी मैं तेरी चांदनी, राजा की आएगी बारात। राजानी राजा जानी, तो प्यार से बोला जाता नाम नहीं। जॉनी मेरा नाम नहीं, राजू बन गया जेंटलमैन। मेरे सपनों की रानी का राधा ना बोले ना बोले ना बोले। 7 रामा रामा गजब है गवारे। भगवान को याद किया जा रहा है। मेरा नाम सॉन्ग सुनने अंग्रेजी शब्द आते हो। स्टार्ट। I love you. Julie, I love you. Keeps on. Keeps on repeating. हो गया। धड़कन में है तू ही तू, I love you. 3 इंग्लिश वर्ड। 4 जल्दी जल्दी। रवि कपूर जी, आपको तो बड़ी याद रहता है यार। राजू बन गया जेंटलमैन। 4 5 गाने तो सुनाई नहीं पड़ रहे, हम लोग को नहीं सुनना है। ओके 7 ओके स्टॉप। 7 सॉन्ग। बात बताया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 के बाद स्कोर्स। अब जो कंप्लेन करेगा उसको माइनस है। नेक्स्ट राउंड। टीम 2 35, टीम 3 35, टीम 4 40 और टीम 5 35, टीम 6 40। अभी इसी राउंड का, अभी टोटल बाद में बताएंगे। All right, next round. Last 2 rounds. अभी क्या है?
मैं आपको एक गाने का विजुअल दिखाऊंगा विदाउट साउंड. You have to guess the song. Okay? We'll start with team 6. गाना दिखाऊंगा विजुअल ओनली. You have to guess the song. सर वो गड़बड़ हुई है. क्या करेंगे कि हम आपको सिर्फ प्रेल्यूड सुनाएंगे यानी गाने की ओपनिंग बैल्स और आपको गाना गेस करना है. तो अभी ये से 11 आ गया तो आपने गेस कर लिया तो 20 पॉइंट्स आप दे दीजिए टीम 6 को. टीम 5 आपका गाना प्ले करने जा रहा है. अटेंशन टीम 5. क्वेश्चन बताना. क्वेश्चन बताना. ये तो वही है. देवानंद टीम 5. फिर प्ले कर देता हूं. रेडी? टीम 5 अटेंशन. हाँ जी, एनी गेसेस? उनकी चांस है ना. शायर तो नहीं. हाँ जी, शायर तो नहीं. इनकरेक्ट. रुक जाइए. आपका गेस. रवि कपूर आप बता रहे दोस्त ना रहा इज राइट. 10 points for team 3. Team 4. 10 points. Okay. अब team 4 attention. यही मौका है जीत जाने का. Team 4 ready? Yes, we are ready. हाँ जी. हाँ जी. ऐप का इस्तेमाल करें कुछ लोग इस्तेमाल. ना उससे कुछ होगा नहीं. उससे कुछ नहीं होगा. वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं जो गेस करता है. क्या डालेंगे उसमें को बताइए. नहीं ऐसा नहीं होता. ओके. बहुत दुखी है. हम ही करते बड़े अच्छे लगते हैं. राइट. 20 पॉइंट्स फॉर टीम 4. ओके. टीम 3. टीम 3 रेडी? हम लोग बहुत आगे हैं हाँ जी. प्लीज गेस मत कर लीजिए. उनको बोल लीजिए. हाँ जी. टीम 3 आप बता रहे हैं. टाइम अप. टीम 4 प्लीज. फिर से ट्राई करो. Okay, 20 points. दिल पर मेरे इज राइट. दो बार आप बजाते हैं. बात कराने तो लोग हैं वो इंटरनेट. वो भी दुखी गाना इसमें आंसू ज्यादा आते हैं. ओके. टीम 2 मोबाइल इस्तेमाल ना करें. टीम 2 मोबाइल से कुछ नहीं होगा. टीम 2 टीम 2 20 points. टीम 2 और टीम 1. रेडी? टीम 1.
इनकरेक्ट 0 हमारे सामने पास होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, मुझे एक चीज पक्का मालूम थी कि जो टीम्स हार जाएंगी वो ईवीएम की शिकायत करेंगी, यहां से आ रही है शिकायतें। शेखर जो आंसर नहीं आया है सही, वो अगली टीम को पास होगा। नहीं, वो हमें मिला ना। नो बोल दिया, सीक्वेंशियली पास होगा। सही कह रहे हैं, ऐसा है रवि भाई, आप देखिए सुनिए, मेरे दिल के चैन इज राइट, टीम 6 को जाएगा वो 10 पॉइंट्स टीम 6 को होगा, टीम 6 को 10 पॉइंट होगा। ठीक होगा, ओके नाउ ओके लेट्स हैव दिस। ऑलराइट, रुमाल निकाल लीजिए, आप तो बोलते हैं। अब आप लोग लाख ईवीएम की शिकायत कर लें, जो जीत गया वो जीत गया। ओके, टीम 1 is 60, please give them a big round of applause. They could have been 80 but they jumped the gun. Okay, टीम 2 जिसमें मेरी पत्नी भी थी वो नहीं जीती है और 3rd नंबर पे है, मतलब पत्नी पहले नंबर पे है बट टीम 3rd नंबर पे है, that is 105। हो गया यही होता है, क्या करें। आप लोग तो घर चल जाएंगे, हमें अभी घर में भी जाके जवाब देना पड़ेगा, कैसे हो गया पूछ रही है कैसे हो गया, हमें रास्ते में बताना पड़ेगा कैसे हो गया। टीम 3 60 रुमाल राजेश निकाल लो। टीम 4 110 टीम 5 85 and the winner team is team 6 with 150 points. जैसा आरोप ने कहा था, अब आप ऊपर रिवर्स करते क्वेश्चन, 4-6 दिए वह बंद कर दिए, बंद आउट। अच्छा, कितने 6 वाले हैं, आइए लाइन से आइए, लाइन हाजिर, ऑनलाइन हाजिर। देखिए कोई बेईमानी मत करिएगा, एक ही लीजिएगा बस। साफ दिखाई दे रहा है बायस होना, अगर वहां पे साफ बायस दिखाई दे रहा है भाई, कोई बेईमानी मत करिएगा, 2 मत लीजिएगा। हाँ, हो गया भाई सब लोग, हो गया खोलो जरा भाई, हो गया भाई सब लोग, हो गए, एक डिनर रेडी है, लेकिन उसके पहले आप लोग जो ड्रिंक्स ले रहे हैं प्लीज। हाँ, अरे तो हम सब की तरफ से बहुत बड़ा थैंक्स और एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है और मुझे लगता है सब लोग खुश होंगे, सब लोग आनंदित होंगे। 3 cheers for Shekhar Verma।
एक और खुशी का मौका है जो हम लोग अभी एक सरप्राइज के तौर पे यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परसों हमारे गोपाल साहब की बर्थडे थी, उनका जन्मदिन था, तो सर सरप्राइज हमारा कहाँ है? ऑलराइट, वी हैव अ केक फॉर गोपाल जी। आज तो मैम भी आई हैं। अरे सर ओ शो है सर। आइए सभी लोग आ जाइए भाई, आप लोग ज्वाइन करें मुझको। आइए आइए सिगरेट पीने वाले कौन है? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गोपाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गोपाल जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चल रही है। Thank you so much. Thank you so much. Happy birthday. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Daddy. Thank you. Everybody. हेलो, दो लाइन। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।